So, Am I good audible? afternoon, namaskar, and welcome to another edition of our webinars in the series Illness to Wellness. And I'm so glad that we are here all together on this pious occasion of Lodi, as you all must be knowing and feeling. And I can see when I was coming back from my clinic that people are already in the celebratory moods and people are gathering. They are doing shopping and buying revdis and gachak and mumfli and some of these things that we're going to talk about and discuss in our today's program as well. So happy Lodi to everyone, and all the festivals, as we were just discussing with Dr. Talwar, are going to be celebrated all over our country today and tomorrow. Today we are going to discuss a very interesting and a very important topic, which is very contemporary to the weather that we are facing, to the winters. It is called the topic has been named as Dil Ka Khayal in winters, and it is very actual, very important for all of us for the reasons again on which our honorable panelists and specialists are going to impart knowledge and going to give awareness to us about. As my friends, all of you know that we have been conducting these webinars since the onset of COVID, since the lockdown, when we could not do the contact programs because almost since past 5 years, since 5 years before that, we have been doing lots of programs, lots of health awareness camps to make people aware about diabetes, about heart diseases, about hypertension, thyroid. We've been conducting free checkups, giving counseling, doing blood tests, and different types of programs have been done under the auspices of the Illness to Wellness program organized by SOCHM, where we've been going out into communities, meeting people, making them aware. But unfortunately, or fortunately rather, we had to move over to this virtual platform with the onset of COVID and the lockdown. And we have done more than 100 programs wherein we have invited one of the most renowned faculties, not only from India, but from all over the world, to educate us about the different diseases and the problems that we are facing to get first-hand knowledge uh, about our problems. So we are indeed delighted to have with us today, with us uh, first of all, I would like to welcome you, sir, Padma Bhushan, Dr. K.K. Talwar, Chairman, PSRI Heart Institute. He is a former head of Department Cardiology, AIMS, New Delhi, and Director, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. Uh, and he's a former Chairman, Cardiology, Max Healthcare, Saki. So, sir, thank you so much for finding time and joining us. Most welcome, and I'm welcoming you not only myself personally, but also on behalf of Sri Anil Rajputji, who's the chairman of the CSR Council of SOCHM. Unfortunately, he couldn't join us today, but he's sent his regards and his Lori wishes and his congratulations and best wishes to all of us. So I'm welcoming all of you on his behalf as well. And also welcoming you, Dr. Sanjeev Gera. He is the director, uh, international cardiology. He's head of department, non-invasive cardiology in Fortis Hospital. So thank you, sir, for finding time and joining us, and welcome to you again. So I think we are having a very important topic today. We're going to discuss heart diseases, heart health, and how to prevent. Actually, the main aim of this program is to disseminate information about the ways of how to prevent heart diseases. As you must have noticed and heard that nowadays it's become very common to hear about heart attacks, heart diseases, heart problems, and especially in the young generation. And we've seen that in many celebrities and sports persons, in actors and people who are relatively fit. So this is also one of the topics that we're going to discuss.
So let me start by opening this. I'd like to come to you, Dr. Varsha. So, is it true that the cardiologists are very busy in winters? This is what we physicians say. No, you can say that as far as the heart attack issues are more in winter than in summer. So indirectly may say that cardiologists may become more busy, that's different thing. But I think that is an issue that in winter the heart attacks, even the brain strokes are more in winter reason. And so this period starting from November onwards, kind of when the winter starts, so there is a chances people, those who have a cardiac involvement already, they are more prone to deterioration if they are not taking proper precaution. And even new heart attacks kind of a thing are also more commoner in this battle because of certain kind of physiological stresses which the weather gives to the body, which makes a person more prone to heart attacks. So that's the main issue. So I think people have to be more cautious during winter to prevent from these kind of health issues. I Thank hope you, this. sir. Doc, yes, sir. Yes, sir. Thank you. Dr. Dira, sir, would you like to elaborate a little bit? Because I also want to understand what happens as such in our body which makes these problems more acute or more often. ऐसा क्या होता है सर कि हमारी शरीर में क्या बदलाव आते हैं कुछ? Could you please elaborate a little bit? Good evening. Am I audible? Yes, sir, but a little bit louder if possible. So, as Dr. Talwar rightly said, that heart attacks are quite actually common and more frequently seen during winters. So, the mechanism which is actually has been postulated is that whenever there is extreme cold, so our peripheral arteries they get vasoconstricted. So, there is a constriction so as to conserve the heat. So, the heart has to actually pump harder in winters so as to maintain that circulation, and that is why the BP goes up. And this the same phenomena happens in our arteries of heart. So there is a coronary spasm along with high blood pressure. So these are the actually main mechanisms which actually lead to more heart attacks, especially when you have already silent heart disease, or if any plaque or block is lying silently in your arteries and suddenly your BP goes up and you take those unaccustomed exercises, like you were sitting idle earlier and then you just start moving in cold weather, so there are more chances of getting heart attacks. That is the main mechanism actually what we see. Okay, thank you, sir. Thank you. डॉक्टर तलवार सर, और ऐसी क्या क्या बीमारियां होती हैं जो कॉमन ज्यादा बीमारियां हार्ट की होती हैं? पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लें तो फिर हम कैसे उनसे प्रिवेंशन करना है उसके बारे में भी चर्चा कर पाएंगे। आप थोड़ा एलैबोरेट करना चाहेंगे सर? देखिए हार्ट की जो बीमारियां हैं, हार्ट जी एलिमेंट्स, जी कॉमनेस्ट आई थिंक दैट वी फेस टुडे इज द coronary artery disease. That is जी coronary atherosclerotic, we call it. You have a fatty deposition into your arteries which supply blood to the heart. So that is a blockage. This is one major issue. Of course, there are certain other cardiac ailments like somebody like cardiac muscle issue. Suddenly the muscle becomes weak. There can be different reasons for it. It may not be peculiarly related to winter, the heart muscle issue, but possibly some kind of viral infection. And the viral infection is probably more commoner in winter. So that can also be said that probably we may be seeing more such patient in winter. So that is then there are like rheumatic valvular issue, which are most in younger people, has no such kind of a relation to the weather as such. So I think these are some of the commonest is the issue of coronary artery disease, high blood pressure. High blood pressure indirectly also stresses the heart, so as Dr. Gera has tried to sort of mention. So so these are some of the ailment, and as he tried to emphasize that the vasoconstriction, the vessels becoming a little more constrict during the winter, the weather issue, and creating more stress on the heart. The blood pressure, the heart rate also goes up, so that also further increases that the requirement of the heart. So plus I think there are a few other factors we should also really have to appreciate during some winter weather. Issue of some dehydration, people probably drink less of water, so that also might cause some vasoconstriction. So
People need to be a little liberal with water in this weather, so that you don't you prevent any dehydration issue, and you cover yourself properly, so that you try to prevent these kind of physiological or pathological changes which occur because of the weather, cold weather. So these are the, and then I think you have to be also cautious in your other habits, because when you are in a winter, people are sitting inside. It's all question of just eating, smoking, and some people alcohol issue also, because everybody has a feeling that it gives you warmth. So, but I mean, we need to realize the limitations and the bad effect of those things also. So these are some concerns. And the particularly, I think, as you said, the major issue which we are worried about today is a coronary artery disease issue, whether it's a relatively younger people or elderly people, that they are prone to heart attacks kind of. So these are, I mean, we need to be aware that these are the issues, and then we need to be lack of exercise in winter. You don't want to go outside because of the weather. Is that's very right. If you go, probably cover yourself. But then we have to create some way that you continue your exercise kind of a protocol during winter, rather than just getting on to, because the sometimes the severe winter sort of does restrict you in your movements. So I Thank think. you, sir. Thank you, sir. We'll come back to some of the aspects of जो आपने बोला है एक्सरसाइज वगैरह के बारे में हम थोड़ा बाद में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर गेरा सर, अभी सर ने ब्लड प्रेशर की बात की, आपने भी ब्लड प्रेशर की बात की थी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल do not understand that the blood pressure rises and the importance of control of blood pressure. So, do you recommend your patients that before winters they need to see doctors, either physician or cardiologist? They might require some change in medication. And do you recommend home monitoring of blood pressure? How important is it and how frequently it should be done? Dr. Casey, you rightly said that hypertension is definitely a major problem now, especially in younger people. We are seeing in our daily OPDs, many younger people, they are coming to our OPDs with BP of 120, 90. Every fifth patient has got such type of BP. So, and they think that this 90 is normal actually. So there is a myth, there is lack of awareness. And we agree that hypertension has been called a silent killer. It's a silent killer. So down the lane, like after 5 years or 10 years, you come to know that you have got kidney disease or heart failure. Your heart pumping function has gone down just because of high BP. Your kidneys are getting affected. So definitely we have to monitor our BP, and the standard is home BP monitoring. It's not one day clinic BP which matters actually, which is called white coat hypertension. We have to rely on home BP readings. Everyone should have a basically calibrated instrument at home, and which actually they should monitor their BP at least twice a week, especially during winters. If they're already taking medicines, and they should visit a physician or cardiologist to see whether they need to adjust their doses or they need to start some new medications, because what happens in winters, the BP goes up, and if you don't monitor, that can cause so many complications like strokes and heart attacks and heart exacerbation of heart failures, especially when your heart function was low. Especially, I would like to mention one important clinical finding, which is actually seen in heart failure with preserved ejection fraction patients when their EF is normal, but during winters they retain water. There is a volume overload. So if you continue taking that type of salt, the amount of salt which you take, what you take in summers, and if you continue to take same amount in winters, and that may cause exacerbation of heart failure events. So we definitely should monitor our BP. We have to visit a cardiologist or physician to change or modify your medications. And home BP monitoring is the standard nowadays. We should monitor at home only. Sir, in simple terms, since we are at it, uh, बीपी चेक करने का सही तरीका, समय कैसे करना है, कुछ बताएंगे प्लीज? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें बीपी मॉनिटरिंग आना चाहिए, बीपी मेजर करना आना चाहिए कैसे करना है। सो 5-6 जी। पॉइंट्स हैं। प्रेशर, पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाई बीपी।
So any BP which is more than 120, 80 is high BP. So कई बार टर्म होती है प्री हाइपरटेंशन और स्टेज वन हाइपरटेंशन और हाई नॉर्मल बीपी विच इज बिटवीन 120 से 130 ऊपर वाला और 80 टू 89 नीचे वाला अगर बीपी हम बोले तो प्री हाइपरटेंशन या आप नॉर्मल हाई नॉर्मल बीपी बोल सकते हैं. बट फॉर एनी इंडिविजुअल यंगर पीपल स्पेशली बीपी शुड बी लेस देन 120/80. एल्डरली के लिए 140/90 से नीचे चलता है. बहुत हाई ऑक्टेजेनियंस हैं तो उनके लिए 150/90 से नीचे भी चलता है. तो सबसे पहले हमें बीपी मॉनिटरिंग पता होना चाहिए. कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए हमारे पास. मर्करी इंस्ट्रूमेंट्स आजकल ऑब्सोलीट है. आजकल एडवाइस नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क. दे हैव बीन आउटडेटेड. तो हमें होम बीपी मॉनिटरिंग करनी है जो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो एक तो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए. कोई हमें कॉफी अगर हमने पी है चाय पी आधा पौना घंटा पहले तो हमें रुकना चाहिए आधा पौना घंटा 1 घंटा. इट शुड बी एम्प्टी स्टमक. और आप उसमें रिलैक्स स्टेट में बैठे होने चाहिए चेयर पे जिसपे आपकी लेग्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए. आप इट शुड बी द इंस्ट्रूमेंट शुड बी ऑन द टेबल. अगर हो सके तो हार्ट लेवल पे उसको रख दीजिए. और आइडियली समवन अदर फैमिली मेंबर शुड बी टेकिंग बीपी नॉट योरसेल्फ. आप रिलैक्स स्टेट में हैंड अपना रख सकते हैं वहां पे और उसमें एक ट्यूबिंग होता है जो कफ के ऊपर होता है. वो ट्यूबिंग मिड ऑफ आर्म में आना चाहिए. और फिर उसमें आइडियली हमें 3 से 4 रीडिंग्स लेनी है प्रेस करने के बाद एंड देन वी टेक एवरेज ऑफ दोज रीडिंग्स. तो जब हम बोलते हैं होम बीपी मॉनिटरिंग के लिए तो आई यूजुअली एडवाइस कि आप 7 दिन की रीडिंग लेके आइए. 10 से 14 रीडिंग्स लाइए. हम देखेंगे आपका बीपी कितना कंट्रोल है. इफ मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स आर बिलो 130/80 और 120/80 देन वी आर गुड विद द ट्रीटमेंट. अगर कोई भी मोर देन 2 और मोर देन 3 रीडिंग ज्यादा जाती हैं तो 140/90 से ज्यादा जाती हैं. दिस मीन्स यू नीड टू एडजस्ट योर मेडिकेशन और डाइट. अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर और टेस्ट विच आई एडवाइज इज एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग. जो हम हॉस्पिटल में एक एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर लगा देते हैं वो हमें एवरेज रीडिंग्स देता है. सो व्हाट हैपेंस इन विंटर्स आवर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एज वेल एज द नॉक्टर्नल फॉल इन बीपी जो एक आइडियल होता है कि रात को बीपी आपका फॉल करता है वो खत्म हो जाता है. तो दिस इज रिलेटेड टू मोर ऑफ हार्ट अटैक इवेंट्स और हार्ट फेलियर इवेंट्स. सो एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली दोज हु आर हाइपरटेंसिव्स और जो लोग दवाई खा रहे हैं और जो कंट्रोल नहीं है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आई थिंक आपने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे ये बताई है कि खाली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली उसको कंट्रोल करके रखना इम्पोर्टेंट नहीं है. खासतौर पर सर्दियों में जो रात के समय बीपी कम होना चाहिए, जब वो नहीं होता तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड इज इट ट्रू दैट मोर हार्ट अटैक्स अकर अर्ली इन द मॉर्निंग? ऐसा कुछ होता है सर? इज इट ट्रू? Yes, आर देयर सम definitely. प्रिकॉशंस दैट यस? सो नॉक्टर्नल फॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एरिथमियाज बहुत होते हैं मॉर्निंग में स्पेशली कोल्ड विंटर्स. बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स हैं तो एरिथमियाज आर नोन टू अकर इन अर्ली मॉर्निंग क्योंकि देयर आर सम कैटेकोलमीन चेंजेस. हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. सिंपैथेटिक हार्मोन्स की जो अमाउंट्स होती हैं लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में. तो ये सब रीजंस होते हैं जो हार्ट अटैक इवेंट्स को ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में बताया जाता है. तो जैसे नॉक्टर्नल पहले सर्ज होता है बीच में अर्ली मॉर्निंग सर्ज होता है फिर इवनिंग सर्ज होता है. तो इसका एक बेसिकली बिहेवियर होता है डायगोनल बिहेवियर होता है ब्लड प्रेशर का. सो ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स द बीपी गोज अप व्हिच कैन कॉज arrhythmias as well as heart attacks, more of heart attacks. Thank you, sir. That was really very enlightening, and for me, and I'm sure for all our listeners. Uh, सर, तलवार सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा. अभी we are listening all the time. In fact, day before yesterday, we heard that one of the doctors and very well known to us at a relatively young age, I would say, our age, not that much, had a severe heart attack, and we are hearing of such incidences very frequently. तो सर, ये ऐसा कुछ बदलाव आया है ज़माने में, समय में, कि जो लोग रिलेटिवली फिट हैं, अपना ख्याल भी रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उनको हार्ट अटैक होने लगे हैं? और केवल हार्ट अटैक ही नहीं, उसकी वजह से मोर्टेलिटी होने लगी है, कि सडन हार्ट अटैक और डेथ. और इसके बारे में वी आर हियरिंग अबाउट लॉट ऑफ इंस्टेंसेस. सो इज इट दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू इट, और दिस इज समथिंग दैट यू हैव नोटेड इन योर प्रैक्टिस आल्सो? I think heart attacks in the young population is an important issue, and in our country, below the age of 35 or so, heart attack is around those who get total heart attacks. 20-25% of the patients are below the age of 35 or so in our country setup, which is nearly only 5% in the Western population.
So we are at a younger age more prone to heart attacks. That is there, but then there are important risk factors which makes people prone to at a younger age. I think the commonness which has been seen in some, we also observed the same in our own study and in the literature, is smoking. Smoking, the commonest risk factor in young people, smoking, alcohol binge when they take heavy alcohol, or the drug abuse also. Of course, no doubt that we do get heart attacks at a younger age as compared to the Caucasian population. Maybe we have some kind of a genetically proneness to it. But I think the younger heart attacks are mainly with the background of people who are smoker, sort of take excessive alcohol, and particularly I think that day they might have drank more enormous amount, and then some kind of other drug abuse. So of course, if somebody has a family background, he is much more prone to it. So I think it sometime we do come across instances, no, so and so was so healthy, वो तो आराम से घूम रहा था, suddenly such an important person, but we don't really know what was the habitual or the lifestyle of that person. Was he a smoker? How much was his into a kind of alcohol use? So these are some of the important things, and I think younger generation, no doubt today, for younger people, particularly working in the corporates at a young age, there's a lot of stress issue also is coming. So I think we need to educate our younger people that a healthy lifestyle is very important, and to prevent oneself from the cardiac issues and the attacks can come. It's not like that it will come only at the age of 50s, 60s. They can come in 30s, 40s, more commoner now. So people have to take care of their, I'll say, lifestyle habits to be sure. So it to say that probably we were now we look at when we gained our independence, what was our average age? It was 34, 5. Yes. So now we have gone to 71. So maybe at that particular time is different. So now I think as we are sort of all have help in different disorders. So the major issue is this risk factor. And because if you take care of these risk, of course, if somebody has a some other issue like hypertension, diabetic issue, high cholesterol issue, they need to be more cautious. So I think these are the I think every young we must to realize, and we need to educate our younger people that a healthy lifestyle is very important. And exercise also, some people feel चलो जब थोड़ा उम्र बढ़ेगी फिर exercise शुरू कर लेंगे. The exercise another, it's important to keep body in a state of healthy state of mind. So I think younger attacks we are coming, we are seeing more, no doubt about. And as I mentioned, are nearly 25% of the heart attacks that we come across are in people below the age of 35. So it's one fourth of the kind of attacks are in that age group, and we need to educate them to sort of both for their exercise activity, their dietary activity, their other lifestyle relaxation activity. They need to be careful. And of course, stress is part of the game today. I'm sure you must be more because you people dealing with the corporate way of younger people's lives. Yes, but then we need to accordingly train them, educate them on that. So I think you're right that younger people we are seeing more and more news, and actually I think if some important person suddenly faint gets into the gets a sudden death, so it becomes more obvious. So, but I think it's basically related to the that we need to be careful in our lifestyle habits, and if somebody has a disease, he should. That's why we are talking today that everybody around 35, 40 should have a preventive checkup, must get your cholesterol, what it is, have your sugar done, look at your blood pressure. So if you have any kind of a risk factor which is growing in the body, if you take them precaution immediately, probably you can prevent this kind of thing. So that's, I think, we are coming across more, but then that mainly is related to some kind of a unhealthy lifestyle habits.
Thank you, sir. So one more thing I'd like to ask you. I think there was a study concerning stroke also. Hmm. So can this be related to atmospheric pollution as well? No, no, no. Pollution is another risk factor. You see, like somebody living in Delhi will have a much more risk in this winter than somebody probably staying in somewhere in Himachal or where there is no such pollution. Pollution is another major because you have pollutants in that the environment which are also unhealthy. They can also generate some kind of general milieu can be changed. So I think pollution is a major risk factor today, particularly in cities like Delhi. Issue. So I think we have to be. That's true, yes. Mm, Because the high PM2 particulate concentration, they themselves are pro-inflammatory and pro-coagulatory. So they you themselves see, can. apart from the pro-coagulant effect, you get more of infective issues. You get more of chest and more chance of getting these flu episodes. That indirectly the stress on the body, tachycardia, that makes you more prone already. So I think you see all these factors are correlated. So, but pollution is a major issue that apart from the other risk factor that we have talked about and shared. Definitely. Thank you, sir. Thank you. I think that was very important. Dr. Gera, sir, would you like to add something to this discussion about heart attacks happening at younger age? Yeah, definitely. As Dr. Talwar rightly said that we are getting younger heart attacks below 40 years. Around 35-40% people are below 40 years of age. So what I think हमारे जो हमारे as compared to Western population 10-15 साल पहले हमारे यहाँ हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें तीन चार रीजंस जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में या जो भी हमने देखा है काफ़ी टाइम से एक तो और जो पोस्टुलेटेड मैकेनिज्म्स हैं वो एक तो ये कि हमारी आर्टरीज छोटी होती हैं इंडियन आर्टरीज या इधर जो आपका साउथ एशियन आर्टरीज हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन वी हैव स्मॉलर आर्टरीज so there is more tendency for blood related and high flow turbulent damages along with plaque depositions in these small arteries अगला अगला जो इशू है वो है कि हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज वेरी लो एसडीएल और जो एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल इज हाई तो हमारी जेनेटिक्स में ही खराबी है दूसरा तीसरी जो इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से देयर इज नो डाउट इन दैट तीसरी बात जो है हम प्री डायबिटिक स्टेट में बहुत पहले से होते हैं डायबिटीज की डायग्नोसिस बहुत बाद में होता है तो डिसग्लाइसीमिया इज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग बिकॉज वी आर एक्चुअली we are dependent on too much of carbohydrate diet we take refined carbohydrate diet along with genetics central adiposity बहुत कॉमन है हम जो भी खाते हैं हमारे पेट के आसपास ही जमता है क्योंकि हमारी प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं और वो भी लो क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं तो ये सब रीजंस है साथ में जो अभी शुरू हुआ है पिछले 2-2.5 साल से यस डेफिनेटली वी वर सीइंग मोर ऑफ यंगर हार्ट अटैक्स ओवर लास्ट 10 years बट स्पेशली आफ्टर कोविड हैज चेंज द सिनेरियो सो व्हाट आई थिंक मैंने कई बार हमने स्टडीज भी किए हैं 100-150 लोगों में यंग लोगों में जो आए थे तो उनका एच एस सी आर पी लेवल्स कंटिन्यूड इन्फ्लेमेशन लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स चल रही हैं उनको स्पेशली आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड विद दैट बैड कोविड एरा सो उसके बाद भी वो इन्फ्लेमेशन चलता रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा आफ्टर कोविड हमने इतने हाई इंसिडेंसेस हैं इतने हाई मोर्टेलिटी रेट्स विद हार्ट अटैक्स हमने देखे हैं यंगर पीपल कमिंग 25 years old coming to us with no history of smoking or alcohol he is coming to us just with some history of genetics and bad cholesterol but definitely covid has changed the scenario what I think is continued inflammation जो पहले भी एक बार postulate किया गया था कि chlamydia से एसोसिएट किया गया था टूथ इन्फेक्शन से कि हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं वायरल इन्फेक्शन से हार्ट अटैक ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज इन्फ्लेमेशन स्टेबल प्लाक अगर पड़ा है 40% की ब्लॉकेज भी पड़ी है दैट कैन कॉज हार्ट अटैक तो हमने एंजियोग्राफीज की तो देखा केवल क्लॉट है देयर इज नो मच ऑफ मोर एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक 50% का साइलेंट प्लाक पड़ा है बट उसके ऊपर क्लॉट बन गया यूजली ये तो बहुत एविडेंट है कि 50 से 70% की ब्लॉक्स में ज्यादा हार्ट अटैक्स मिलते हैं हमें 80% से ऊपर कोलेट्रल्स बन जाते हैं जाना चलता रहता है इलेक्टिव पेशेंट ज्यादा आते हैं बट with borderline blockages we have more of heart attacks तो इन्फ्लेमेशन इज डेफिनेटली रीजन कोविड के बाद कुछ ना कुछ हमारे ब्लड में प्रोकोएगुलेंट फैक्टर्स बढ़ जाते हैं उसकी वेलोसिटी स्लो हो गई है ब्लड हमारे प्लाक्स के ऊपर एंड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स या जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा बीपी गोज अप और हैवी स्मोकिंग कर ली आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली अनकस्टम्ड विच इज व्हाट हैपेंड विद मिस्टर राजू श्रीवास्तव
He got so many stents after that CPR. He was revived, but he suddenly started doing heavy exercises in gym. So maybe some silent blockages were lying over there. So कुछ ना कुछ inflammation 2-2.5 साल में तो हुआ है. We can't blame vaccines only because बहुत ही sporadic reports हैं mRNA vaccines के साथ कि एक दो episodes हुए हैं myocarditis के, heart attacks के, but we can't blame. But definitely there is this COVID infection. Something is actually happening which studies only can prove कि भाई क्या चल रहा है अंदर, inflammatory markers कैसे हमारी blood की hemodynamics या हमारे जो अंदर की rheotrix है उसको change कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक दैट वाज वेरी एलैबोरेट। कुछ और सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला था, आपने उनके जवाब भी दे दिए। एंड वैक्सीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि वैक्सीन लगाने के बाद हार्ट अटैक हो सकता है, ये ज़्यादा हो जाते हैं। सो आई थिंक इट्स गुड दैट यू क्लैरिफाइड दैट ऑल्सो। सो अभी वी वुड लाइक टू मूव अ बिट अहेड। तलवार सर, आपके पास आते हैं। I, being a diabetologist, see lots of diabetes patients, और हम सब डायबिटीज पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपको दिल की बीमारी और जो आप हार्ट अटैक की बार बार बात कर रहे हैं उसकी आशंका बहुत ही ज्यादा हो जाती है। सो सर प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस। हाउ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डायबिटीज टू हार्ट डिजीज? व्हाई डू ऑल द डायबिटिक्स डाई ऑफ हार्ट डिजीजेस, मेजॉरिटी ऑफ देम? You see, diabetes makes you more prone to atherosclerosis. This is one of the most important risk factor. Of course, we have like obesity, blood pressure, dietary issue, exercise. They all lead to can also cause diabetes as well. So diabetes mainly is because of the sort of your atherosclerosis proneness becomes much more. Whether it is in the coronary arteries, whether it is in the cerebral vessels, kind of a thing. So, and they most often have a very silent kind of progression. They often have also high cholesterol. Hyperlipidemia is a very common association with diabetes. So these metabolic risk factors make you more prone to atherosclerosis, and that results in the cardiac episodes, acute MIs, anginas, and all that. And the other issue with diabetic that is that they may get a silent kind of attacks because of the diabetes. I mean, you have neuropathic issue, your nerves pain you may not perceive, and it may be kind of a that you never complained of chest pain, but suddenly you land up in emergency with acute MI kind of a thing. Shortness of breath are more commoner with diabetes because the diabetes also affects the heart muscle as such. Like we say, there's a diabetic cardiomyopathy kind of situation. Maybe it is small vessel disease, is not the epicardial vessels which are showing much narrowing, but small vessels. And the muscles may get affected, may get weak, like what we call diabetic cardiomyopathy. So the your LV dysfunction issue occurs, and then some of the diabetic, I mean, the heart may become more stiffer, like the commonest cause for heart failure with the normal ejection fraction is kind of a underlying diabetes, underlying maybe hypertensive. So these are diabetic. I think diabetes probably is a cardiovascular disease. I'm sure it's your specialty, but I think today cardiologists are as much involved in handling diabetes. You will agree with me, and as Definitely. cardiologists are, this becomes so diabetes is anybody who is a diabetic. Sir, am I audible? Hello? Yes. Hello, am I audible? Yes, yes, you're audible now, sir. There You're was some audible. interruption. I'm sorry, there was some interruption. That I think That's okay, sir. That's okay. diabetes is a major metabolic issue which is related to the atherosclerosis happening, whether it is in the cardiac vessel, brain vessel, I said, even the periphery body, like patient can. तो म्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
So I think जी diabetes is, I'm so sorry, the diabetes is a major metabolic risk factor for coronary atherosclerosis or even cerebral atherosclerosis or even peripheral atherosclerosis. So I think diabetes linked with the cardiac problem is very sort of close. And as I mentioned, even some people may get diabetic cardiomyopathy. People should also realize shortness of breath, heart may get enlarged. So I think managing diabetes, preventing diabetes, or if somebody has effectively be controlling it, does make a lot of difference in preventing the cardiac episodes. डेफिनेटली डेफिनेटली थैंक यू सर आई थिंक आपने बहुत अच्छे से और यू हैव हाईलाइटेड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि डायबिटीज की वजह से जो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स में खून की नलियों में ब्लॉकेजेस जल्दी हो जाती हैं और ज़्यादा हो जाती हैं। और आपसे पहले डॉक्टर गेरा बता रहे थे प्री डायबिटीज़ के बारे में। सो प्री डायबिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि यही सारे बदलाव, यही सारे चेंजेस डायबिटीज़ बीमारी होने से पहले, जब आपकी शुगर नहीं बढ़ी, तब ये सब प्रॉब्लम आपके शरीर में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में ऑलरेडी शुरू हो जाती हैं। बट पीपल फ्रीक्वेंटली डोंट केयर अबाउट देम बिकॉज दे थिंक कि अभी तो टाइम है। सर क्या बोलेंगे आप इसके बारे में, कुछ बोलेंगे प्री डायबिटीज के बारे में? No, I think the people, I mean, these are, you will agree with, these are all lifestyle related issues. Unless somebody family background is fine. So I think we need to, number one, everybody around 30 plus age, look at your metabolic factors, your blood profile, what it is, and look at also your that you are following the healthy lifestyle related habits. uh, so I think pro-diabetic is only that you are when you do the blood test and suppose you find that your fasting sugar is beyond what is accepted as a normal, then though postprandial may be okay, but that means that you are have some tendency to diabetes. So I think ideally, I feel that people around 30, 40 people should now try to have a blood screening parameters set up to be careful. Of course, take care of your weight because obesity gives you more chances of a diabetes. The diabetes, I think India is now like a capital of diabetes, the world capital of diabetes. So this is I mean, somehow or the other, we need to create more education in our school children, younger generation, to see what way they can prevent themselves from these kind of lifestyle related disorders. I hope Very Dr. true, sir. says, Very true. We have to start very early, and in fact, the series Illness to Wellness, it started as an effort to create awareness, especially about diabetes and lifestyle diseases. And we have conducted tests on more than 16,000 individuals from across Delhi, and we have done more than, I think, 8,000 HbA1cs in this pursuit of identifying diabetics. And we have identified a lot of new diabetics, people who are absolutely unaware, educated them, given them material and guidance. So we are trying, and this I think is just another step in the same direction. Thank you, sir. That was very informative. Now moving a bit ahead, I already see that we don't have that much time. Got Dr. Gera sir, what are the symptoms? कैसे पता चले कि अब मान लीजिए कोई दिल की बीमारी है, समस्या है, because people may not understand all these things that we are discussing, but at least they feel something. So what does a person feel when they have a heart disease, especially a coronary artery disease या ऐसी कोई बीमारी? Yeah, so this is very important that awareness होना चाहिए अपने symptoms के बारे में कि वो गैस का symptom है बिल्कुल कि muscular pain है या angina का pain है। तो जो हार्ट अटैक से पहले की इवेंट्स होती है, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, उसको एंजिना बोलते हैं, एंजाइनल चेस्ट पेन होता है। बड़ा क्लासिकल चेस्ट पेन है विच इज कॉल्ड एक्सर्शनल चेस्ट पेन। तो आप जब चल रहे हैं तो आपकी सेंट्रल चेस्ट में हैवीनेस आ रही है या सफोकेशन फीलिंग आ रही है, टाइटनेस फीलिंग आ रही है, जो आपके जॉज में जा सकती है, आपके शोल्डर्स में जा सकती है, शोल्डर्स किसी में भी जा सकती है, राइट लेफ्ट कहीं भी जा सकती है, लेफ्ट आर्म में जा सकती है, इवन कई बार बैक में जा सकती है। एटिपिकल सिम्टम्स मिल सकते हैं फीमेल्स में, ब्रेथलेसनेस मिल सकती है, एक्सट्रीम फटीग मिल सकती है, जो बैठने पे सीधा खड़े होने पे रुक जाते हैं। आप चल रहे हैं तो आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और जब आप रुक जाते हैं रेस्ट पे ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो दिस इज क्लासिकल
एंजाइना इवेंट, जिसको एंजाइनल एपिसोड्स बोलते हैं, और ये प्री हार्ट अटैक इवेंट्स होते हैं। अगर हम अभी इसी वक्त हम इसका इलाज कर लेंगे, डायग्नोसिस कर लेंगे डिफरेंट टेस्ट से, जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने हार्ट अटैक्स को बचा सकते हैं, हार्ट की मसल को बचाया जा सकता है। तो टिपिकल सिम्टम यही है। जो कहते हैं गैस, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये गैस तो नहीं है, लोग आधा पौना घंटा गैस की दवाइयां खाते रहते हैं और हार्ट अटैक चल रहा होता है। तो एनी एनी एंजाइनल पेन जो 30 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा रहता है और स्वेटिंग के साथ आ रहा है, जिसमें एयर हंगर है, जिसमें यू फील सफोकेटेड, आपको लग रहा है मैं बाहर जाऊं, मेरे को बड़ी बेचैनी सी हो रही है, व्हाट वी कॉल डायफ्रोसिस हो रहा है, बहुत पसीना आ गया, ठंडे हाथ हो गए आपके, और बहुत पेन हो रहा है, इवन डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या वॉमिटिंग नोजिया की फीलिंग हो रही है, और वो जो कॉमन आपने एंटासिड्स लिए हैं 10-15 मिनट में ठीक नहीं हुए, जो आपने कॉमन ओवर द काउंटर दवाइयां जो घर में पड़ी हैं ले ली हैं, वो ठीक नहीं हुए, स्पेशली विद बैकग्राउंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अगर आप में रिस्क फैक्टर्स हैं, मान लीजिए आप हैवी स्मोकर हैं, या आपको शुगर है जो अनकंट्रोल्ड है, इवन कंट्रोल्ड है, या बीपी है, या जेनेटिक्स है, यार मोटापा है, आप चलते नहीं है ज्यादा, तो आप पहले अपना रिस्क फैक्टर्स का असेसमेंट कर लीजिए। और कोई भी ऐसा पेन जो 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा सेंट्रल चेस्ट में हो रहा है, रेडिएट कर रहा है, साथ में सफोकेशन हो रही है, तो मैं कहूंगा ये एंजाइनल या हार्ट अटैक पेन हो सकता है, हमें सीधा जाके पहले ईसीजी कर लेना चाहिए, जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके। थैंक यू सर। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से और और बहुत, आई थिंक बहुत सरल तरीके से समझाया। एंड फ्यू वर्ड्स अबाउट the typical things that may or atypical things which may happen in diabetics। अब डॉक्टर तलवार ने भी बताया था, थोड़ा सा उसमें और elaborate कर दीजिए। Even they may not feel। या सो साइलेंट हार्ट डिजीज बहुत कॉमन होती है डायबिटिक्स में, क्योंकि नर्व डैमेज हो जाता है, तो टिपिकल ये एंजाइनल पेन नहीं आएगा आपको। तो ये टिपिकल सिम्टम्स आते हैं, एक्सट्रीम फटीग हो सकता है, जैसे आप बहुत थक गए हैं, ये आपकी आपको एटिपिकल सिम्टम्स जैसे ब्रेथलेसनेस ज्यादा हो रही है सीढ़ी चढ़ने पे या कुछ करने पे, या आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, साथ में नोजिया हो रहा है, एपिगेस्ट्रिक, स्पेशली विमेन में बहुत एटिपिकल सिम्टम्स मिलते हैं, नोजिया, एसिडिटी, वॉमिटिंग्स करके कई विमेन हमारे पास आती हैं हार्ट अटैक के साथ। तो एट डायबिटिक्स में खासकर साइलेंट हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है, जिसको हम एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं, उसमें पेन नहीं होता, हाँ ब्रेथलेसनेस, फटीग, या फिर ये जो एपिगैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक एसिडिटी सिम्टम्स होते हैं उसके साथ आ सकते हैं, इसको हम एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं। तो आप कुछ भी ऐसी चीज हो जो पिछले 15-20 दिन पहले नहीं थी या 1 महीना पहले नहीं थी, बट वो अब एकदम से सडन अराइज हुई है और वो ठीक नहीं हो रही है कॉमन मेडिकेशन से, तो वो एक हार्ट अटैक का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। तो इसलिए हमें आगे फिर इवेलुएट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। सर अब इसकी बात चली रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और बता दीजिए कि क्या क्या टेस्ट करने जरूरी हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, वो तो एक तो रिस्क फैक्टर असेसमेंट के लिए, कि अपना रिस्क फैक्टर असेसमेंट कर लीजिए, शुगर चेक कर लीजिए, HbA1c एवरी 3 मंथली जो हमारा एवरेज शुगर देता है, अगर डायबिटिक्स हैं तो हर 4 महीने पे कर लीजिए, साल में 2 बार कर लीजिए, जिनको रिस्क फैक्टर्स है, जेनेटिक्स है, कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए अपना, अपने वेट पे चेक कीजिए, नॉर्मल नॉर्मल ये सिंपल से चेक्स हैं जो किए जा सकते हैं। बट अगर हम हार्ट की बात करें, तो एक ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ईसीजी एक मिथ है, जैसे हम कैंप्स वगैरह में लोग जाके ईसीजी कराते हैं, तो दे थिंक दैट इफ ईसीजी इज नॉर्मल वी हैव रूल्ड आउट हार्ट डिजीज। ईसीजी कैन ओनली डायग्नोज ओनली 10 to 20% ऑफ हार्ट डिजीजेस। साइलेंट हार्ट डिजीज तो ईसीजी से पता भी नहीं चलती, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, साइलेंट हार्ट अटैक कई बार ईसीजी से हमें मिल जाता है, स्पेशली डायबिटिक्स में। जब हम देखते हैं कि ईसीजी में चेंजेस और मरीज कहता है कि मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, फिर हम इको करते हैं तो उसमें हार्ट का फंक्शन कम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम, और साथ में जो साइलेंट हार्ट डिजीज का टेस्ट है वो स्ट्रेस टेस्ट है बेसिकली। या तो आप सिंपल सा ट्रेडमिल टेस्ट कीजिए, या स्ट्रेस इको कीजिए, या स्ट्रेस थैलम कीजिए, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन बेस्ट असेसमेंट करके बताएगा कि आपको क्या चाहिए आपकी पॉकेट के हिसाब से। सिंपल टेस्ट जो है वो ट्रेडमिल टेस्ट है, बहुत ही चीप टेस्ट है, 15 मिनट में हमें रिजल्ट पता चल जाता है। एंड टीएमटी कैन डायग्नोस 70 to 80% ऑफ हार्ट डिजीजेस, साइलेंट ब्लॉकेजेस को हम पता कर सकते हैं उससे। बट कई बार क्या होता है, टीएमटी भी फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं, तो हमें टिपिकल सिम्टम्स को असेस करना है, फिर हम हायर टेस्ट बताते हैं। आजकल एक और टेस्ट आया, अगर आप में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर आजकल हम देख रहे हैं वो है सीटी कैल्शियम स्कोरिंग। स्पेशली डायबिटिक्स में हम लोग आजकल सीटी कैल्शियम स्कोर भी कर रहे हैं। कैल्शियम स्कोर अगर आपका 100 से ज्यादा है और आर्टरी वाइज है जैसे, तो इसका मतलब है कि अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज और ब्लॉकेजेस के चांसेस ज्यादा है। फिर हम दूसरे एंजियोग्राफीज वगैरह बताते हैं या फंक्शनल टेस्टिंग बताते हैं। तो बेसिकली दो तरह के टेस्ट है जो मैं एडवाइस करूंगा, एक तो है एनाटॉमिकल टेस्टिंग, एक है फंक्शनल टेस्टिंग। और अगर आप में बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं तो वी डू बोथ टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट टीएमटी से या कोई भी स्ट्रेस इको से, और एक सीटी कैल्शियम स्कोर। डेफिनेटली हम इन दोनों को कोरिलेट करके हम एक स्कोर निकालते हैं,
फिर उसके हिसाब से हम एक इन्वेजिव कॉरोनरी एंजियोग्राफी बताते हैं। तो आई थिंक दोनों टेस्ट होने चाहिए। हाँ, अगर आपका रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो ईयरली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ईसीजी, टीएमटी, एको, ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें इंक्लूड करने चाहिए अपने हर साल के टेस्ट। थैंक यू। यू सर, थैंक यू। आई थिंक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जानकारी दी है. अब we'll move towards prevention, and then if we have time we'll take on some more questions. सवालों का पिटारा तो मेरे पास बहुत बड़ा है. तलवार सर, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम सबके लिए होती है, आपने कुछ कुछ उसके बारे में बात भी की, क्या खाएं कि दिल की बीमारियों से बचें. देखिए, when we come to the diet, a balanced eating, I'll always say, I won't say, I mean, we have to see that we have to restrict our fat intake. हम कहते हैं 15% टोटल कैलोरी फैट से आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए. And number one, that the fat intake has to be restricted. And we know that what are the fat. आजकल जो ज़्यादा जंक फूड्स हैं उसमें बड़ा फैटी इशू आते हैं, because trans fatty acid, which is the most unhealthy kind of oils, they are being used for those kind of cooking which are not good. So I think one is trying to be that make sure that you have a adequate number of proteins in the diet, you have carbohydrates as well as low fat kind of thing. Take lot of roughage, because roughage is one with, that's why the carbohydrates with the roughage, vegetables, fruits. आज जिस WHO भी कहती है कि 400 ग्राम वेजिटेबल और फ्रूट इंसान को डेली लेना चाहिए. मैं मानता हूँ कई बार थोड़ा सा दोस्त हु आर लिमिटेड रिसोर्सेज ये इशू थोड़ा आता है, पर फिर भी जो एक तो रफे, और जैसे लोग अपना चपाती लेते हैं, अब ये अगर उसको होल व्हीट से लो रादर देन के मैदा वगैरह से लो, तो इस तरह की जो डाइट की पहले तो अपनी जैसे मैंने कहा कि रफे वेजिटेबल की और इनकी जो रिक्वायरमेंट, ऑयल का मैं आऊंगा, भी ऑयल क्या लेना चाहिए, दैट्स अनदर मेजर इशू दैट वी समटाइम फेस. एंड take the calories according to your sort of requirement. मैं कह रहा हूँ कि अपना बॉडी वेट है वो आपका एक तरह के इंडेक्स होना चाहिए कि वेदर मैं ओवर ईट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. बिकॉज एवरीवन नोज दैट अकॉर्डिंग टू दी हाइट मेरा वेट के मुताबिक इतना मेरा वेट होना चाहिए. If you're crossing your weight, you should be careful that you have to restrict your intake as well as increase your physical activities. वो कहते हैं ना कि जितना आप लेते हैं, make sure that you spend it also. If you don't spend it, going to get collected inside your body. So डाइट में एक तो नॉन वेज जो लोग रहते हैं, मेरा उनको होगा कि थोड़ा मटन वगैरह हम आजकल नहीं एडवाइस करते, लॉट ऑफ फैट इन दैट. चिकन और फिश लोग ठीक है, पर उसको इस तरह कुक करिए जैसे बॉइल्ड है या रोस्टेड है. इट्स नॉट स्पाइस दैट, यू डोंट पुट एनी काइंड ऑफ टू मच ऑयल इनटू देयर कुकिंग. वो कहते हैं ना कि पहले जैसे लोग फिश खाते थे, अब फिश पकौड़ा हो गया, अब जब अब इस तरह चीजें जाएंगे तो वो अनहेल्दी में टेस्ट बढ़ जाता है. तो एक तो देन द शुगर इनटेक. You see, the biggest problem, I think most of like our people feel that we are vegetarian. We do not have access to non-veg. So why the in vegetarian diet, the greatest I think unhealthy issue is use of sweets. We have so many sweets become a culture with us now. I mean, earlier I recall when as a youngster घर पे कभी मिठाई होती थी तो त्योहारों के दिन होती थी, जैसे आज लोहड़ी है, यू विल नो दैट दिस टाइम यू विल हैव सम गच्चक होगा कुछ, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल लुक फॉरवर्ड टू दैट ड्यूरिंग दोस पर्टिकुलर डेज. And similarly, Diwali time you will look forward to some. But now sweets has become a common every day. Dessert probably has become a routine with most of the houses. So I think sweet they say is more poison than even salt. So I think people need to restrict sweets. Sweet shops are flourishing, but we need to be sort of make sure they're very unhealthy, because all this, so that is one issue.
in the diet. And then bakery item again we should try to restrict because उसमें trans fatty acid use होता है. जितने भी ये preservative जो they have to be, so I think the use of bakery items should be minimized. Then as fruit issue is no, I mean, like that sweet from fruit has no concern. It's mainly the sweet sugar that white sugar that one is talking about. Oil is another issue that because what happened in the 60s, 70s when this coronary artery disease becoming more common in the Western population, people realized it's because of high cholesterol. So then the oils came which were with low cholesterol, like polyunsaturated oils, corn oil, sunflower oil. They became popular because they are less in cholesterol. But we did not realize for I think 2 decades or so that they have a very unhealthy omega 6 and omega 3 ratio. The ratios were very high in these oils, and that part had resulted in high triglycerides, low HDLs, and so people, I mean, the cardiac issues continue to be same. So I think now we must have the oil which have a low, reasonable omega 6 and omega 3 ratio, like 5 to 10, and the oil that we consider which are good for health are like rice bran oil, mustard oil, rapeseed oil. Olive oil is okay, it's very expensive, so I monosaturated oil like that we need not. But I think these are some of the common oils which are available with us, and we should make more use of these oils rather than these polyunsaturated oils. Of course, sometimes you can use a combination, no issue about it. The one precaution I think mustard oil, which is widely used in the country in the northeast, or is mainly that they sometimes these oils are repeatedly used. You boil and then cook food and then use the same oil again, and then there the toxic factors come. So I think we need not once you have used the oil, discard it, don't reuse it. And this probably also is happening in different kind of people are very fond of samosas, puri, and those who cook it in these shops, they may be using it repeatedly. So, but I'm trying to say that you have to be balanced with your diet. You have to be careful about the sugar use, and you have to be oil that you need to use. And then as I mentioned about the sort of we should have a roughage more cereals, millets. These days, there's a lot of being advocated advice that try to have more other like jowar, bajra because they have more of roughage in their content, which is helpful to the body to lower cholesterol, lower diabetes, kind of thing. And apart from this, as far as the in the diet, nuts is another issue. We do recommend that almond and walnuts are more better. They don't have that much of cholesterol. People should not worry. Their oil ratio is good, and probably they are better than the other like kaju and all that cashew nut. I mean, it's better. Almonds and walnuts are probably more preferred. So this is the way I think one has to be care. Avoid smoking, avoid alcohol, so, I mean, and the balance, my one more, frankly, as a physician or a doctor, which I have learned is don't be unnecessarily obsessive also. Some people become so obsessive, "नहीं, मैंने तो ये नहीं खाना, मैंने तो वो," I mean, they make it obvious to that also, I think, is not. You know what you should not eat. And if suppose one day you have little excess because of some reason, you can balance it out in the other meals. So be little more practical, balance, moderation. They say is the best principle. But you should know that which are the kind of unhealthy diets that we come across. We must make sure that we try to avoid use of those things. I hope if there are any more Yes, I think questions. that was very elaborate. One thing, is there an importance of sleep also? Do you feel कि भाई पूरा सोना जरूरी है? There's no doubt. I think that's also very healthy for the body. People say about minimum 7 hours, 6 to 7 hours sleep is important. Uh, but you see, there are like today. I mean, it is easy to say, but I will not recommend people to take medicines to sleep. To be very frank, I'm not in favor that okay, you start using drugs and then so you.
try to develop a healthy sleep habits also. And what we try to say that okay, do regular exercise, even in a evening exercise makes your body tired and that makes you sleep. These are the ways you probably so I think use those ways rather than medication. Try to eat early so that you give a gap of a few hours before you sleep, because sometimes if you eat late, little heavy, that can also disturb your sleeps. And try to have some kind of I'll say a religious way of thinking in life. Is stress and strain sometimes does prevent you from sleep, but try to develop this habit that you tolerate those kind of things. So you try to adopt your habit, which gives you a better way of getting a proper sleep rather than resorting to medication. मेरा I mean ये थोड़ा सा concern है, but I think uh, people sometimes they say this milk is also good at night. It has a melatonin. It may give you, but the problem today with food item is they get the pure items. I don't know what milk is going to contain. I mean, this is another. I think your organization should make this also as a one of the agenda. The pollution or adulteration in the food item. I think we are. This is another issue which is what to eat and not to eat depends. I mean, the vegetables are adulterated, the fruits are getting into it. So I think इस पे भी थोड़ा सा कुछ there should be a We'll definitely concern होना. definitely work on this, and we'll get with the concerned persons if we can do something about this. I think this is a very good idea and this is a very good initiative. In fact, it was an eye opener for me about the milk and melatonin, because Oh yes, I I also tell you. drink milk every day, but I No, no, didn't know no. about You it. see, when I was small, I remember at home, every day the mother will wake you up if you're not taking your milk. And then later on, when in medicine you start reading, then you come to know that melatonin is rich in milk. But only thing the problem is that we have to have a pure milk also. I don't know today. I mean, Yes, as you said, I have been from a village and a habit of taking, but now somehow or the other, I'm not able to stick to it because I'm not sure what kind of milk I'm getting. But I think it is true. some kind of a item, food item, which gives you some kind of melatonin, and then the gap between the food, exercise, some exercise before evening, so that you tire your body, kind of thing, and some prayers before you sleep, so that you get some. I mean, sleep is important, but we must make sure that we try, because this is a major issue these days. Sleep Very disturbance true. is our everybody will come, and okay, of course you do recommend sometime medication so the people think, I think they are relatively safe. I'm not against them, but it's better to avoid, to make sure that you can change your habits. They say na, today's sleep hygiene, that how your sleep Yes, is yes, preserved as a hygiene. yes. Very true, sir. बहुत बहुत अच्छा बताया आपने. Thank you so much, sir. Thank you. So I डॉक्टर think गेरा सर, अब आई थिंक नेक्स्ट डाइट के बारे में तो सर ने बहुत एलैबोरेटली बहुत अच्छे से बता दिया. नाउ टेल अस अबाउट एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए. तो थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर तलवार आल्सो टू ऐड. यस, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के साथ साथ. एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए. तो मैं यूजली 4 टाइप्स की एक्सरसाइजेज रेकमेंड करता हूँ. पहली तो एरोबिक्स हो गई, सिंपल, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया. अगर आप 30 मिनट्स पर डे ये सब कर रहे हैं, या 150 मिनट वीक में आप निकाल लेते हैं सिंपल एरोबिक्स एक्सरसाइज के, तो आपका हार्ट सही रह सकता है. दूसरा, एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती है जो हम बताते हैं. पहले हम क्लियर कर देते हैं कि हाँ, ये पेशेंट एक्सटेंसिव एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग्स कर सकता है बाय ट्रेडमिल टेस्ट या जो भी होता है. सिंपल असेसमेंट से हम बता सकते हैं कि आप फिट हैं, आप एक्सरसाइजेज ये वेट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं. तो हफ्ते में 2 बार आपको वेट ट्रेनिंग्स भी करनी चाहिए, सो एज टू बिल्ड अप योर मसल स्ट्रेंथ, जिससे आपका हार्ट जो है वो कम हार्ड वर्क करता है. अगर आपकी मसल्स बिल्ड हो गई है, उसमें वस्कुलैरिटी अच्छी है, तो हार्ट को कम काम करना पड़ता है.
तीसरा जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जैसे योगा टाइप्स की एक्सरसाइज होती है। चौथा मैं स्ट्रेस रिलीविंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताता हूँ, जिसको मेडिटेशन या प्राणायाम टाइप्स की जो एक्सरसाइजेज है। तो ये चार तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ अपने हर पेशेंट के लिए, उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है, या प्रिवेंशन हार्ट डिजीज के लिए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले हम उनको स्ट्रेस टेस्टिंग से एसेस कर लेते हैं कि उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छी है, कितना लेवल जाना चाहिए उनको, कितना हार्ट रेट चाहिए उनको, कैसी एक्सरसाइज करनी है। बट यस, 30 minutes डेली सिंपल वॉकिंग 2 to 3 kilometers per day, or yeah, 150 minutes in a week are definitely recommended to for any person, even if जिन लोगों को हार्ट फेलियर है, जिनके हार्ट की पावर कम है, 35% से कम है उनका एजेक्शन फ्रैक्शन, उनको भी स्लो वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग 30 minutes 40 minutes की हम लोग एडवाइस करते हैं, जिससे आगे के बेसिकली मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स वगैरह कम रहते हैं और दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. I think that was quite elaborate and viewers would have understood कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी देर करनी है। सर, आप कुछ एक्सरसाइज के बारे में ऐड करना चाहेंगे तलवार सर? मैं बिकॉज ये आपका जो सेशन है इट हैज रिलेशन टू खत्म द हो रहा है, हाँ। हाँ। विंटर। विंटर का है तो विंटर में कई बार ये जो एक्सरसाइजेस जो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, ठंडा बहुत है। इंडोर कितने लोगों के पास थोड़ा फैसिलिटीज है दैट यू कैन गेट इनटू और हैव सम काइंड ऑफ treadmills at home? I say that exercise has been always important for the body as a heart and for the body as such. Even in winter, I'll advise people should try to do some kind of indoor physical activities. Because वो जैसे कहते हैं ना कि अगर लिमिटेड मीन्स भी हैं, घर में स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर चढ़ना शुरू कर दो, I mean that go up and down for a period of time, or even standing, you can little light jogs, you can do that, stretching exercises. So आधा पौना घंटा जरूर आपने अगर once you know you can't go out for a walk, try to find way that you exercise inside. This I think will help you not only from your heart but help you for a feeling better, preventing even exposure to the cold or flus issues, and as well as sleep issues. That if you do exercise, so ये थोड़ा indoor मैंने देखा है कि आजकल because of the winter issue people have a limited facilities inside, but then some kind of a these exercise which can be done, which will but devote about nearly 20-30 minutes daily to these kind of activities. ये थोड़ा Yes, I मैं think you are, जी बिल्कुल, you are very right sir, and especially आजकल सुबह जाना, because दिल्ली जैसे शहर में pollution इतना होता है, सुबह smog होता है, and that could in fact be detrimental. Sir, I know we are running out of time, but दो सवाल और हैं जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, because I think without that हमारा आज का discussion incomplete रहेगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, और and contrary to that, at times we physicians say that there is something called medical angioplasty as well. तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दीजिए कि दवाई अगर लेनी है, डॉक्टर ने कहा है, तो क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, कितना फायदा होता है? देखो कोलेस्ट्रॉल का तो नो डाउट अबाउट इट, जितनी अभी साइंटिफिक नॉलेज है दैट वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग कोलेस्ट्रॉल टू नॉर्मल। आई मीन हरे जैसे क्या हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं इट्स ए बैड कोलेस्ट्रॉल। ना इसका फॉर ए नॉर्मल पर्सन है कि अपना अगर आप बिलो 120 या 100 के करीब आप कर लें इसको तो ठीक है। अगर किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है, जैसे अनजाना है, किसी को नया डिजीज है, किसी को स्टेंट लगा है, तो उसका हम कहते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से नीचे होना चाहिए। और जिसको कुछ ज्यादा रिस्क फैक्टर है तो 50 से भी नीचे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जितना लो कोलेस्ट्रॉल है उतना अच्छा है हार्ट के लिए। मेरा कहने का मतलब है कोलेस्ट्रॉल को bring to the normal the range that is expected to be good for the body, we must make effort। and जहाँ जिसको अगर हम प्रिवेंटिव, अगर सपोज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 120 से ज्यादा है एंड यू टेकिंग ऑल प्रिकॉशन इवन स्टिल यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट डाउन, आई से नो हार्म टू टेक सम काइंड ऑफ, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तो हम कहते हैं एक्सोजिनस, जो हम ना फूड आइटम लेते हैं वो वहां से आता जी, है। देयर इज आल्सो कोलेस्ट्रॉल मेड इन द बॉडी इटसेल्फ व्हिच इज एंडोजिनस। एग्जैक्टली। some people have more endogenous kind of a production and so they may say जी मैं कुछ खाता नहीं, मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर मेरा क्यों नहीं कम हो रहा? तो इसलिए some people have to resort to medication।
आई थिंक ये एंटी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जो हैं वो हार्म नहीं, वन शुड रिजॉर्ट, आई थिंक ये कुछ लोग नहीं टॉलरेट करते, देन देयर आर ऑल्टरनेटिव्स आल्सो सम टाइम अवेलेबल। तो ये मैं कहूंगा कि नो डाउट पहले अपना लाइफस्टाइल जरूर करिए, विच दैट विल आल्सो लोअर कोलेस्ट्रॉल, रेगुलर एक्सरसाइज, if you are not able to achieve the ideal kind of level, no harm to take some kind of these drugs to bring it to normal, because that is a important risk factor for heart attacks kind of a thing. So मेरा ख्याल है कि Yes. इसको जरूरी सोचना चाहिए। Thank you, sir. Thank you. I think this is very important क्योंकि ज़्यादा cholesterol up to 85% of LDL is actually made by heart. This is very important for people to understand. जो लोग WhatsApp के messages पढ़ते हैं कि cholesterol की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से डॉक्टर गेरा सर, एक आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ आ रही हैं हार्ट के डिजीज के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, और डायबिटीज के लिए भी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिससे हार्ट में फायदा होता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि जस्ट टू सेंसिटाइज आवर ऑडियंस दैट दे शुड डिस्कस विद देयर डॉक्टर्स दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, दैट देयर आर मेडिसिन विच माइट बी हेल्पफुल, जो दवाइयाँ आज से 10 साल पहले नहीं हुआ करती थी। सो बिगेस्ट जो इनोवेशंस हैं जो हमें पिछले 4-5 साल में मिली हैं और जिससे फायदा मिल रहा है मरीजों को, वो है उन मरीजों के लिए जिनका हार्ट फेलियर, जिनको हार्ट का फंक्शन कम होता है। तो एक सेक्यूबिट्रिल वल्सार्टन करके एक दवाई है, टैबलेट है, अब तो उसका काफ़ी पेटेंट भी हट गया, अब तो चीप हो गई है वो दवाई। तो वो अगर हम 100 mg ट्वाइस ए डे की डोजेस तक पहुंच जाते हैं तो कई बार देखा ये है कि हार्ट का फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है और रिवर्स रीमॉडलिंग हो जाती है, हार्ट का जो साइज हो जाता है वो कम हो जाता है, हार्ट की पावर बढ़ जाती है। हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है थकावट होना, फंक्शनल क्लास जिसको बोलते हैं, आदमी पहले एक सीढ़ी चढ़ने पे थक रहा था वो 3 सीढ़ी चढ़ जाता है। तो ऐसी इंप्रूवमेंट्स मिली हैं इस दवाई के बाद जिसको बोलते हैं वल्सार्टन सेक्यूबिट्रिल कॉम्बिनेशन, और ये उन लोगों को दी जाती है जिनकी हार्ट की फंक्शन 40% से नीचे होता है। तो अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके इसके बारे में ज़रूर पूछिए। अगर आप नहीं खा रहे हैं या किसी और दवाई पे जैसे रेमिपेटल है या कोई भी एसी इनहिबिटर है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, बट हाँ अगर अंडर फिजिशियन गाइडेंस। एक तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। दूसरा जो इनोवेशन है वो ग्लिफोजिन्स का है जिसको बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। स्पेशली ये भी हार्ट फेलियर के लिए आई, तो दवाई ये डायबिटीज़ के लिए थी, जैसे आपको भी पता होगा, आप बहुत यूज़ कर रहे थे पहले। बट एकदम से कुछ ऐसे एविडेंस है, कुछ ऐसे ट्रायल्स हैं कि अब ये डायबिटीज दवाई नहीं रहेगी, अब ये कार्डियक मेडिकेशन बन गई है और कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको। स्पेशली अब ऐसा एविडेंस आ गया है कि जो लोग जिनको डायबिटीज़ भी नहीं है और जिनकी हार्ट की पावर कम है, आप उनको भी अगर ये दवाई डालें, ग्लिफोसिन या एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स जो है, तो ये आपके हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव कर सकती हैं, डाययूरेसिस में हेल्प करती है, कंजेशन के सिम्टम्स हटा सकती है, हार्ट की पावर बढ़ा सकती है। तो 3 से 4 जो पहले पिलर्स होते थे हार्ट फेलियर थेरेपी के, अब उसमें दो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, एक ये वल्सार्टन सेक्यूबिट्रिल कॉम्बिनेशन और एक दूसरा SGLT2 इनहिबिटर्स। मैं कहूंगा ये दोनों के बारे में हर मरीज को पता होना चाहिए और अपने फिजिशियन से जाके इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो जो हमें ज़रूर जिनके बारे में चर्चा करनी थी और हमने की, एंड आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि आपने इतना समय दिया। अब जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू प्लीज गिव अ मैसेज टू आवर ऑडियंस। डॉक्टर केरा, प्लीज, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू आवर ऑडियंस? So the important message is that for taking care of your heart, three things are very important. एक तो avoid too much of salt, sugar and fats, and good fats खाने चाहिए, packaged food, processed foods नहीं खाना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, वेट ट्रेनिंग्स बीच बीच में इंपॉर्टेंट, फॉलो प्रिवेंटिव चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर विंटर जो कंडीशंस है आजकल बहुत एक्सट्रीम कोल्ड चल रहा है, तो यू कैन रिसोर्ट टू होम एक्सरसाइजेज, जो इंडोर एक्सरसाइजेज आप ग्रेजुअली वार्म अप्स कर सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा वार्म अप होके जाइए, थोड़े थोड़े सिप्स वाटर के पीते रहिए, मल्टीपल लेयर्स आप पहनिए कपड़े के बजाय, आप 2 थिक लेयर पहनने से बजाय आप 3-4 लेयर्स पहनिए जिससे एयर ट्रैप हो जाए आपकी। और अपना हेल्दी फूड्स खाइए, एवरी 2 अर्ली 3 अर्ली, नट्स पे जोर दीजिए। साथ में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। अपना ब्लड प्रेशर रूटीनली चेकअप करते रहें, अपनी हार्ट बीट चेकअप करते रहें। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है वो अपनी दवाइयाँ ना भूलें, ब्लड थिनर्स ना भूलें, और अपना फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट जो रेगुलर चेक्स हैं उसको करते रहें। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट एक्चुअली मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर तलवार सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप म्यूट पे हैं सर। Apart from what Dr. Gera has mentioned, three things more I will like to mention. Number one, smoking से बचिए,
ठीक है, पोल्यूशन का तो आपके हाथ नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, बट जो आप अब बचा सकते हो, स्मोकिंग इज वन, एंड पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो एज बैड एज एक्टिव स्मोकिंग, सो मेक श्योर दैट योर colleagues who smoke, counsel them also. The second thing, alcohol issue. I think because particularly in younger generation, younger people, then they're getting into job. This is another issue coming, and I think government is also trying to be. They are ready to lower the age. 25 से 21 कर लो drink. मतलब पता नहीं इससे क्या ऐसा है. Revenue is one issue, but I think we must look at the health issues. Access to alcohol should be limited. I am not against कि आप इसको बैन करो, but access should be limited so that we need to gradually. This is the younger age group from, कहते हैं 16 से 23-24 साल की उम्र है जो थोड़ी सेंसिटिव होती है, उसमें थोड़ा हमें रादर रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए. अगर अमेरिका में 25 साल है तो हिंदुस्तान में 21 साल क्यों करना है दिल्ली वालों ने, मेरे को नहीं पता. आई विश दैट प्रोबेबली आई एम मीनिंग फ्रॉम द मैसेज दैट वी नीड टू बी केयरफुल our younger generation. The third, exercise, has lot has been said about that. I think we need to be regular with exercise. And मैं एक बात कहूँगा, थोड़ा आजकल जो stress वाला issue है, particularly younger generation, I think is going through more stress than what probably we were facing it when we were growing in our careers. So I think थोड़ा अपने आप को train करना to stress tolerance. Stress तो part of life ही रहेगा. वो तो everybody, if you have to grow in life, you have to face stress. If you think you can grow in life without stress, today is not possible, but train yourself. Be, I will say, be true in your dealings, be true in your interaction with your colleagues. They say it's good not to be cunning and all that, वो थोड़ा ठीक नहीं रहता. Be and be helpful to others. थोड़ा बहुत अपने का किसी की जरूरत किसी को है थोड़ा करिए. ये थोड़ा ना, this gives a very kind of healthy feeling to the body, probably gives better healthy hormones to the body, and so you can bear stress and strain of life more. थोड़ा कहते हैं spiritual habits हैं, adopt those. But anyway, I think I must thank you for this session, that whatever way we can educate our population to be careful in the various ways you can prevent yourself not only from heart attacks, strokes, but also stay healthy, because the कहते हैं health is the wealth. So if you Yes. are healthy, then you probably can face many things. So thank you so much. I hope. Thank you so much, sir. In fact, I would like to thank you. Thank you on behalf of SHM, on behalf of Shri Anil Rajput ji, who unfortunately is not here with us today, but you attended, you've been our guest earlier, and you interacted with him. So he's very thankful to you on his behalf, on behalf of SHM, and on my own self. I'm so grateful and thankful that both of you found time and attended this session. And I'm very thankful to Team SOCHM, to Richard, to Shri Sandeep Jain ji, and to the whole team who made this possible, that we could sit together and we could discuss so important topics. I think the topics that we have discussed today are very important. I'm sure our audience has taken multiple messages and they would try to follow in their lives. Thank you so much. Namaskar and Thank Jai you. Hind. Thank Thank you. you. Namaskar. Namaskar.